हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हो आप? एवरीथिंग इज फाइन ना? ओके, तो लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था? वी हैव सी अबाउट द प्रीवियस वीडियो अबाउट द फंक्शन एंड मेथड, एंड we will solve the simple problem by using function add function. We have created the add function, and today we have created the another function example, that is prime number. You already know about prime. What is prime? How to find the prime number? Everyone is know about the prime number. Prime number is that जो number it's divisible by one and only itself, not divisible by another number. Okay, so let's check. हम क्या करेंगे? एक फंक्शन बनाएंगे. We have already created a syntax of Java. Okay, then here we create a function public static integer is prime नाम पे मैं फंक्शन बना रहा हूं. ओके, then we collect the number here, integer n. Okay, then what is the logic of prime number? I already see. If I take a one number, how can you check the number is prime or not? Okay, you can see it is divisible by one or itself and not divisible by another number, is that is number is prime number. Okay, so check. If I get a n, then how I will be check? Yes, we having a for loop. Okay, integer I is equal to 2, then I less than n and I plus plus. Okay, we having a if statement. Inside the if statement, what we'll do, we have checked the number is divisible by any number, but not answer will get 0. Okay, so how will check? N mod I, if n mod I is equal to 0 है, yes, n mod I is equal to 0 है, then return me false. Okay, then return me as a false. Okay, if n mod I is equal to 0, अगर n की वैल्यू हम मॉड करें I से और आंसर 0 आ जाए, देन रिटर्न फॉल्स करेंगे. ओके, एंड अगर नहीं है तो रिटर्न ट्रू. फिनिश. Okay, then we have completed the function part, and now this time to call the function. How I call? Just take a scanner for input from the user. This is very beneficial for us. Okay, so here we declare a scanner input is equal to new scanner inside system.in. Okay, for that we take a variable var is equal to input dot next int. Okay, then क्या करेंगे? अब हमने वैल्यू तो ले ली, अब हमें ये वैल्यू पास करनी है फंक्शन में, क्योंकि हमें इस वैर वैल्यू की इस वैर को हमें चेक करना है कि ये प्राइम है या नहीं. जस्ट चेक इफ प्राइम, यस, वैर इज इक्वल टू, अगर वैर की वैल्यू यस ट्रू है, अगर वैर की वैल्यू ट्रू है, then before that here we use not integer, here we use boolean. Yes, okay, then if is prime var is equal to true, then print system.out.print. What we have to print? We have to print, yes, number is prime. Number is prime.
Okay, else else system dot print. What we have to print here? Num is, yes, not prime. Yes, all is done. System dot print enter a number. Now you have see here. Okay, it has shown me enter a number. So I enter 17 and here check num is prime. Okay, so 17 is a prime number. Then we have check. Okay, again we have run and we have check 21. And yes, you can see here number is not prime. 21 is not prime. Okay, so our code is right direction. And now we have to check how output is generated. Okay, when we call the, okay, when we enter the number, it's go to the if statement and check the given number is prime or not. If I take var is equal to 5, okay, if I take var is equal to 5, then what is happened? Is prime var is equal to 2. Okay, when we call the is prime function, the compiler go to the prime function, okay, and execute the whatever the write in inside the prime. So yes, here we see prime, we get n value. What is the value of n now? Yes, n is the 5 now. Then for integer i is equal to 2 से लेकर i less than n तक, मतलब i less than 5 तक, मतलब 2 से लेकर 4, 2 3 4, ओके, 3 ही इटरेशन हो गए. ओके, 1 क्यों नहीं लिया मैंने? क्योंकि 1 से अगर 5 डिविजल होगा, 1 से तो 5 डिविजल होगा ना, तो क्या आ जाएगा? ट्रू आ जाएगा. तो ऐसा तो नहीं है. हमें क्या चाहिए? 1 और इटसेल्फ ये छोड़ के अगर बाकी नंबरों से आपका गिवन नंबर डिविजिबल होता है तो वो नंबर प्राइम नहीं है. अगर नहीं होता तो यस, इट इज प्राइम नंबर. देन हमने चेक किया, इसके अंदर हमने स्टेटमेंट लगा दिया. ओके, सो n mod I, what is the current value of n? That is 5. 5 mod 2, it's not a 0. Then again I plus plus I become 3, and again 5 mod 3 is equal to 0. Is true? Not. It is false. Again I plus plus I become 4 less than 5 is true. Again check if 5 mod 4 is equal to 0. Is it true? No. Is it not true? Then again I plus plus I become 5, but 5 less than 5, the condition is false. Okay, then ये ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा. ओके, एंड रिटर्न ट्रू. रिटर्न ट्रू किया है हमने हियर. ओके, एंड रिटर्न जब हम ट्रू करेंगे तो डायरेक्ट ये क्या होगा? मेन फंक्शन में जाएगा. और जहां हमने कॉल किया था फंक्शन इज प्राइम वार, यहां में क्या मिल गया? ट्रू. तो ट्रू इज इक्वल टू ट्रू. अगर ट्रू की वैल्यू ट्रू के बराबर है, देन व्हाट वी हैव टू प्रिंट? यस, गिवन नंबर इज प्राइम. अगर फॉल्स है तो गिवन नंबर इज ट्रू. इजी था ना प्राइम नंबर लॉजिक? यस. So thank you. This is about the day, and we will see you again and next video. Okay, thank you. Take care. Be happy and be healthy. Bye.